हम शाहरुख खान की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो उनका मन्नत बंगलो है, how much do you think is the Bandra bungalow today, मन्नत? It's worth 130 crores. प्रियंका चोपड़ा काफी चर्चे में रही हैं thanks to the IT department. She owns about 5 apartments in one building that is Raj Classic at Warsaw, which is like the mini Bollywood, you know, little Bollywood of India. तो वो 5 फ्लैट्स का उस बिल्डिंग में कितना नेटवर्थ होगा आपके हिसाब से? Collectively, it should be valued at 10 crores, 5 flats. जैसे ही साल खत्म होता जा रहा है, पेज 3 hotter and hotter होता जा रहा है, because we're replaying the best stories of page 3 from the entire year. चलो इस हफ्ते हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी ही scintillating story. Simi, welcome to the show. Hi, Supreet. And now, just like last week, we'd like you to pick your favorite page 3 story of 2011. If I had to just quickly pick one without thinking too much, it's probably the property story, जहाँ पे हमने बताया था कि which star is worth how much in how many hundreds of crores. तो हमारे जो superstars हैं सब बहुत सारी properties own करते हैं और यहाँ पे हम उनकी movies की remuneration की बात नहीं कर रहे थे. It's the assets that they own in hundreds of crores and it was really fun. So let's check it out. King Khan believes in living life king size. मुंबई के बैंडस्टैंड एरिया में उनके पैलेशियल बंगलो मन्नत की कीमत लगभग है पूरे 135 करोड़। इसके अलावा SRK has a villa in the UK and is set to own a real estate pie in the 8th wonder of the world, Palm Islands of Dubai. Reports have it कि शाहरुख खान ने सेंट्रल लंदन के पॉश पार्क लेन एरिया में एक अपार्टमेंट खरीदा है जिसकी कीमत है 20 million pounds, which is the highest paid property price abroad by any Bollywood star. दुबई के एक मैन-मेड आइलैंड में शाहरुख का पाम जुमेरा नाम का एक विला भी है जो उन्हें गिफ्ट किया गया है। इसके अलावा शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज और उनकी क्रिकेट टीम भी उनकी प्रॉपर्टी में करोड़ ऐड करते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में बच्चन फैमिली भला पीछे कैसे रह सकती है? बच्चन अपैरेंटली करीब 227 करोड़ की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ओनर्स हैं। अमिताभ बच्चन रुपीस 190 करोड़ और जया बच्चन रुपीस 37 करोड़ की प्रॉपर्टीज ओन करते हैं। Senior Miss Bachchan has 2 cars and her husband has 11, including a Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz and BMW. जया बच्चन ने रुपीस 3.09 करोड़ शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं और रुपीस 3.67 करोड़ ज्वेलरी में। तो वहीं अमिताभ बच्चन ने रुपीस 134 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं शेयर्स में एंड रुपीस 2.91 करोड़ ज्वेलरी में। Sources say Miss Bachchan owns 364 kg of silverware, diamonds and pearls worth rupees 3.22 crores. Besides a house in Mumbai, a plot in Noida Film City and flats in Bhopal and Mumbai. एक एफिडेविट के मुताबिक अमिताभ बच्चन owns agriculture land in Uttar Pradesh, Barabanki district. A house worth rupees 4.5 crore and a plot of rupees 12 crore in Mumbai, a rupees 35 lakh flat in Gurgaon and immovable properties worth rupees 67 lakh in Delhi. बच्चन के मुंबई में जलसा और प्रतीक्षा की कीमत है लगभग रुपीस 160 करोड़। ऐश्वर्या और अभिषेक ने भी कार्टर रोड पर एक बंगलो लिया है। इसके अलावा इस कपल ने दुबई में भी एक पॉश घर परचेज किया है। कहा जाता है कि बच्चन ने इस प्रॉपर्टी के लिए करीब 35 मिलियन अरब एमिरेट दिनार्स पे किए हैं, यानी कि 4 करोड़। सलमान खान भी प्रॉपर्टी के मामले में कुछ कम नहीं है। बैंडस्टैंड जैसे पॉश इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट में फ्लैट के अलावा सलमान टू हैज अ प्रॉपर्टी इन दुबई। रिपोर्टेडली सलमान खान ने करीब 20 करोड़ रुपए का एक डीलक्स पेंट हाउस भी परचेज किया है। इस बिल्डिंग का नाम एक्वा मरीन है और सलमान इसमें 2 फ्लोर्स ओन करते हैं। पॉश बांद्रा सबर्ब में कार्टर रोड पर एक बंगलो और बैंडस्टैंड में एक ट्रिप्लेक्स फ्लैट भी सलमान के नाम दर्ज है। एक रियल एस्टेट एजेंट के मुताबिक सलमान ने इस ट्रिप्लेक्स फ्लैट के लिए 27 करोड़ दिए हैं। Salman Khan has also gifted an apartment to his sister Alvira Agnihotri, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। B-Town girls are not left behind in making such big property investments. Deepika Padukone, who already owns an apartment in Bandra's cozy home, ने हाल ही में 2,776 square foot 4-bedroom apartment purchase किया है, जो मुंबई के प्रभादेवी एरिया में है। और इस अपार्टमेंट के लिए दीपिका ने 16 करोड़ रुपीस का वॉपिंग अमाउंट पे किया है।
आमिर खान के पास मुंबई में बांद्रा में रेजिडेंस के अलावा पंचगनी में भी एक बड़ी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पर आमिर ने लगभग 7 करोड़ स्पेंड किए हैं। एंड ऑफ कोर्स ही ओन्स अ प्रोडक्शन हाउस टू। जॉन अब्राहम ने भी रिसेंटली एक न्यू प्रॉपर्टी एक्वायर की है। जॉन हैज पेड 19 करोड़ फॉर द 4-story स्ट्रक्चर और साथ ही 95 लाख स्पेंड किए हैं इसकी स्टैम्प ड्यूटी पर। जब प्रियंका चोपड़ा के घर पर आईटी रेड्स हुए तब उनकी भी प्रॉपर्टी के राज खुले। आईटी सोर्सेज के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा ने वर्सोवा के राज क्लासिक बिल्डिंग में 5 फ्लैट्स परचेज किए हैं। पिगी चॉप्स के नाम एक और अपार्टमेंट भी है जो 3 फ्लैट्स को कंबाइन करके तैयार किया गया है। इन फ्लैट्स के अलावा पता चला कि मिस चोपड़ा ऑल्सो ओन्स अ पेंट हाउस एंड 3 फ्लैट्स जिन्हें प्रियंका ने रेंट पर दिया है। इन सभी स्टार्स की प्रॉपर्टी की लिस्ट शायद और भी लंबी होगी, पर इतना तो तय है कि बी टाउन स्टार्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में यकीन रखते हैं और ऐसा करने में वो हाई प्राइस पे करने से भी नहीं डरते हैं। Well, stars have big bucks, but we at Page 3 have big guts. क्योंकि हमारे पास है सिमी चंडोक। So let's start party shorty with Page 3 pioneer and Bollywood insider Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi, Supreet. Simi, I'm curious कि Bollywood stars इतनी investment property में क्यों करते हैं and what's their real worth? Supreet, I think they're probably just following the examples set by their predecessors. If you look at Sunil Dutt, you look at Raj Kapoor, Rajendra Kumar, Devanand, most of these people, you know, they may not be active in Bollywood today. All these legends have invested a lot in property. And I'm sure that their families probably never need to work for generations and generations to come because इनकी जो property worth है, कहीं पे कुछ rent पे दिया है, dubbing studios हैं, theaters हैं, editing rooms हैं, everything. They make so much money to live comfortably every month that they don't have to worry. So it's probably a security factor. As for the stars investing in property, there are many reasons, but I think मैं थोड़ा कम ही बोलूँ तो better है. Let's go to the expert. I have something for you here. Let's check it out. And now we have with us real estate and property expert Ashok Gulati. He's going to tell us about the stars, their property and their worth. Welcome to Zoom and welcome to Page 3, Ashok. Hi everybody. अशोक, आप रिच एंड फेमस के प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, रियल्टर हैं, आप सबसे ज़्यादा इनसाइड इन्फॉर्मेशन जानते हैं, तो वी आर प्रॉब्ली नॉट दैट एक्सपर्ट कि हमारे जो स्टार्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज आर वर्थ हाउ मेनी क्रोर्स. सो दैट्स व्हाई यू नो इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू हियर. सो इफ यू हैव टू टॉक अबाउट ऑल द स्टार्स, अगर हम शाहरुख खान की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो उनका मन्नत बंगलो है, विच इज़ लाइक अ लैंडमार्क इन बांद्रा टुडे एंड बॉम्बे, हाउ मच डू यू थिंक इज द बांद्रा बंगलो टुडे, मन्नत? Yeah, assumedly they may be having more than 25-30,000 square feet. It should be in the worth of 135 to 40 crores. वाह, और उसके आगे उन्होंने लंदन में भी apparently प्रॉपर्टी ली है जो कहा जाता है कि it's about 20 million pounds. So how much do you think that is in rupees? The London property जो आप बोल रहे हो, Central London में, it should be at least worth 130 crores. And Dubai में he's been gifted a property because वो अपना नाम lend कर रहे हैं वहाँ पे, and he's supposed to be the brand ambassador of a very luxurious complex there. How much do you think that property is worth? These houses are minimum worth 50 crores onwards. Okay, तो अगर हम मैथ करते हैं तो उनकी मन्नत, उनका लंदन अपार्टमेंट एंड उनका ये दुबई का अपार्टमेंट, how much do you think that's worth together? Simple arithmetics adds up to 325 crores only in these 3 properties. So wow, and we're not talking about his cricket team, we are not talking about his production company, nothing. We're only talking about his property and it's about 350 crores roughly. Only the known properties. That's very interesting to know about Shahrukh. लेकिन अब हमारे बच्चन्स की बारी है and they have quite sizable properties here in Mumbai. तो जो उनका लैंड है इलाहाबाद में या जो उनकी बाकी की इन्वेस्टमेंट्स हैं कहीं भोपाल में, हम उनको तो रेफर ही नहीं करेंगे यहाँ पर. वील ओनली स्टिक टू व्हाट वी नो बेस्ट, दैट्स मुंबई. तो यहाँ पे उनके जू में 2 बंगलोज हैं, एक है प्रतीक्षा, एक है जलसा. तो बेसिकली प्रतीक्षा एंड जलसा जो ये 2 बंगलोज हैं विच आर सो फेमस इन जुहू एंड दे आर लाइक अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. हाउ मच डू यू थिंक दे आर वर्थ? They should be worth minimum 160 crores together. Okay. और जो अभिषेक एंड ऐश्वर्या ने apparently कार्टर रोड में इतना बड़ा बंगलो खरीदा है, it's about 3 floors right there, ocean front. How much do you think that's worth if you had to just gesticulate? Gesticulation, it would be minimum 90 crores as in today. और एक उनका UAE में भी कहीं पे अपार्टमेंट है या कोई प्रॉपर्टी है, how much do you think that's worth? जहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि it's worth a few million dinars. How much do you think
from your sources that could From be our sources, what you heard is approximately valued at 40 crores. So wow, अशोक, आप जो फिगर्स दे रहे हैं उसके हिसाब से मेरा जो मैथ बहुत वीक है. मुझे ऐसे लग रहा है कि इनकी सिर्फ बॉम्बे की प्रॉपर्टीज और एक यूएई की प्रॉपर्टी इज वर्थ 400 crores almost. 300 crores, I would. Since you said your maths is bad, so it's 300 crores. Okay. I'm not used to those kind of figures, you see. And now we have to talk about the Dabang Khan. और दबांग खान तो काफ़ी लो प्रोफाइल हैं. जब भी उनके घर की बात आती है हम सिर्फ गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ही सुनते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद हिज ओरिजिनल होम विच इज़ एट बैंडस्टैंड ओवरलुकिंग द सी अगेन, विच इज़ गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, जहाँ पे उनकी फैमिली उनके साथ रहती है. हाउ मच डू यू थिंक दैट अपार्टमेंट इज अप्रॉक्सिमेटली वर्थ, अशोक? At least around 17 crores. तो 17 crores ये हो गए. और उनके पास एक कार्टर रोड पे बंगलो है अगेन इन बैंड्रा एंड देन अनदर फ्लैट इन बैंड्रा. सो हाउ मच डू यू थिंक दैट बंगलो इज वर्थ? We have heard he's bought it in the region of 60 crores. Wow, so that's 60 crores, 17 crores, 77 crores and still counting. What about the Bandra apartment, the other one in Aquamarine? Apparently, it is worth 15 to 17 crores. उनके कहीं वर्ली में भी फ्लैट्स हैं. अभी recently papers में भी आया था. He was trying to dispose of one flat, but apparently he still owns 2 more flats in Worli, which again, if our viewers don't know, is a very, very posh area in Bombay. How much do you think that's worth? Each flat is worth at least 9 crores, so collectively approximately 20 crores. और उन्होंने अपनी बहन अलविरा एंड ऑफ कोर्स अतुल अग्निहोत्री, हिज ब्रदर इन लॉ, उनको भी एक फ्लैट दिया है जिनका कहा गया था इट्स वर्थ 10 crores. And his favorite place where he hangs around, his Panvel farmhouse. तो सलमान के फार्म हाउस का वर्थ कितना होगा? ऐसे सुनाई दिया है कि it should be worth at least 25 crores. तो आप जल्दी से अब ये सारे जीरो फिगर्स को इकट्ठे करके मुझे एक राउंड फिगर दीजिए कि सलमान्स प्रॉपर्टीज अप्रॉक्सिमेटली आर वर्थ हाउ मच, एंड वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट बॉम्बे. You're talking only about Bandra and Panvel. It's Yes. approximately 140 crores. एंड ऑफ कोर्स प्रियंका चोपड़ा काफ़ी चर्चे में रही हैं थैंक्स टू द आईटी डिपार्टमेंट, एंड वो सब कुछ डिनाई करती हैं. शी इज़ नॉट दैट रिच अपेरेंटली. आई एम श्योर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वुड डिसएग्री. लेकिन अगर जितना डिस्क्लोज हुआ है तो शी ओन्स अबाउट 5 अपार्टमेंट्स इन वन बिल्डिंग दैट इज राज क्लासिक एट वर्सोवा, विच इज़ लाइक द मिनी बॉलीवुड, यू नो, लिटिल बॉलीवुड ऑफ इंडिया. तो वो 5 फ्लैट्स का उस बिल्डिंग में कितना नेटवर्थ होगा आपके हिसाब से? Collectively, it should be valued at 10 crores, 5 flats. वाओ. एंड एक उनका पेंट हाउस है अगेन इन अ सिमिलर एरिया विच इज मेड आउट ऑफ 3 होम्स. तो अगर हम कॉन्जर्वेटिव फिगर भी लेते हैं तो हाउ मच डू यू थिंक दैट्स वर्थ? उसका भी कम से कम 9 करोड़. एंड शी apparently rents out these 5 flats. So how much rent is she getting from these flats? She's apparently getting around 70,000 per flat, so equivalent Per to around month. 3.5 lakh per month, only from these flats. So how much do you think is Priyanka's total net worth? Of what we know of from the income tax declarations, these properties collectively worth are 20 crores plus the rental income that she's earning every month. Wow, so Priyanka Chopra, so much for not being rich, is over 20 crores. That's great news. I wish we could all be not rich in Not this rich. kind of a way. अच्छा अशोक, ऑन अ सीरियस नोट, आपको क्या लगता है कि स्टार्स प्रॉपर्टी में अपना इतना सारा पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं? व्हाई नॉट इन अदर बिजनेसेस? व्हाई आर दे सो कीन कि प्रॉपर्टी में अपना पैसा डालते हैं? By the nature of property investments, real estate investment is as solid as a real estate. It serves couple of their purpose. उनके main purpose क्या होता है? At one go, they can park a lot of money. Correct. Secondly, they are constantly on the move. Stars are on the move. When they park in investments in property, they don't have to look at it continuously. They don't have to follow it up like in a business or in like in an equity and stocks. And then it's always appreciating. It's always earning good rentals. It's always, by the nature of it, doesn't need any further care. And more so, like the big stars, like the King Khan, the Big B, the Junior AB, they own iconic properties. जैसे कि लैंडमार्क्स हैं उनके Just बंगलोस. like, these are landmarks. They're landmarks in India. They've become like visiting homes. Yes. And why they do this is basically now their aura is as big as industrialists. They are looked at par within the society. So they need to own this kind of status symbol houses. And more so, they add touch of glamour to the lifestyle products that they advertise, they brand for. So these kind of houses definitely adds to their glamour. तो वाओ, तो ग्लैमर ऐड करता है एंड दे ऑल्सो गेट मोर ब्रांड एंडोर्समेंट. सो बेसिकली पैसे को पैसा कमाता रहता है. पैसे को पैसा कमाता है और पैसा दिखा के पैसा कमाते हैं. Well, thank you, and you spoke really well. This has been very insightful for us. We really enjoyed chatting with you. Hope to have you on a show again very soon. Thank you. It has been wonderful knowing their wealth as well. The gossip and style on page 3 is simply endless. And now, I'm not saying bye yet, so see you on the other side of this break. Maheka is definitely one of those.
I really like the concept of her blending in very traditional, very Indian fabrics with very sexy, super sexy and super short skirts and everything. And if designers can tempt me to wear their clothes more than once, I think they have to be brilliant, and Maheka Mirpuri makes it right there. Shot में हम बात करते हैं हमारे stylish stars की. But there are some designers who behind the making of these style divas. Now for our Hot Shot segment, who's one of your favorite designers amongst the 2011 lot? Yes, there have been a few, so it's difficult to choose. But I think one name that comes to my mind right now is Maheka Mirpuri. And like we said previously on this show last week, कि हम वो designers पे focus कर रहे हैं जो mostly fashion week से दूर रहे हैं, and in spite of that, they've made an impact. And I think Maheka is definitely one of those. I really like the concept of her blending in very traditional and very Indian fabrics with very sexy, super sexy and super short skirts and everything. And if designers can tempt me to wear their clothes more than once, I think they have to be brilliant, and Maheka Mirpuri makes it right there. Well, that's pretty much your style anyway. Yeah. Let's have a look. And one such designer is Maheka Mirpuri, who as a rule refuses to participate in any fashion week. And yet, when she hosts her own fashion shows, she gets the best stars to walk the ramp for her. और क्यों नहीं? उनके designs हैं ही irresistible. Now let's talk about something we both like talking about. And what is that? Parties of the week. Where all have you been this week? It's been quite a nice packed week. We should probably start with Sunday at the races, because you know what that means. That means very stylish, very good looking people. So the Kambatas, Dilshad and her husband Farooq, they hosted this beautiful, beautiful Sunday afternoon, and there was just every element that you're looking for on a Sunday. There was glamour, there was style, there was stars, familiar faces, everything. I think we should just take our viewers right there. Let's go. Well-dressed socialites, popular stars, and lots of glamour and stylish industrialists. Sabhi the yahan racing Sunday par. But seems like Dharmendra stole the show. Check out how handsome he is compared to younger stars. And ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं, उनके crazy fans को ही देख लीजिए. So what else happened this week then? I think there's another event by Farzana Contractor, and then another fashion show. We should not be doing the talking and let the viewers do the watching. Foods and wines are part of high life. Farzana Contractor ने किया host अपने annual food event को, जहाँ था everything related to the gourmet world on display. अमेरिकन डिजाइनर निकोल मिलर की कलेक्शन हुई लॉन्च मुंबई के एक हाई एंड स्टोर में. ये देखिए और एंजॉय कीजिए आप अमेरिकन ट्रेंड्स. Simi, always great to have you on the show. Thank you so much for being with us today as well. My pleasure. तो देखा, ऐसे या वैसे हम आपको मजबूर कर ही देते हैं कि आप बोले oh my gosh. Well, page 3 is such an OMG show. Well, we're like that. So keep watching us only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.